Hello and welcome to this special webinar that we are having on the occasion of International Yoga Day that was held last week. I think all of us on dialysis, we are often plagued by various, questions, difficulties coping with the disease. हम सब जो dialysis के मरीज हैं, हमको बहुत मतलब कभी-कभी हताश महसूस होता है, कभी-कभी निराशापन महसूस होती है कि ये मुझे क्यों हुआ और we feel sad many times that our life has been upended by this disease. लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें चेयरफुल रहना चाहिए जितनी हद तक हो सके. And I personally have benefited a lot from meditation, and I would really like that all of you also experience this and try this out in your own life. So it's a beautiful tool. It's a secular tool. It is not affiliated to any religion, but it's just a tool for us to understand ourselves better and cope with our problems better. Today we have with us a very renowned and a very experienced practitioner of meditation and Vipassana, Shri Harish Nath Addiga ji. He is a long-time Vipassana practitioner and an assistant teacher with the Vipassana Research Institute. Since 2001, he has been dedicated to teaching and supporting meditation practitioners, particularly across Telugu states, and continues to guide both Indian and international students in the tradition of S.N. Goenka ji. Thank you so much, Harish Nath ji, for taking out the time and spending time with all of us here, dialysis patients, in this webinar organized by NephroPlus. Without further ado, I'm going to hand it over to you to take the proceedings forward. Thank you so much. Yeah. Thanks, Kamalji, and namaste, everyone, all the participants who have come. Yes, and thanks for, giving us an opportunity to serve here. Yeah. So, we are all comfortable with English, no problem. Yeah. Or shall we switch to Hindi? Which language? Maybe if you can mix it in both, I think that will be very helpful. ओके, तो आप सभी का स्वागत है जी, नमस्ते. और कमल जी को भी नमस्कार, और सारा टीम को जिन्होंने लगभग 1 महीने से इसके पीछे मेरे से ये जुड़े हुए थे. पता नहीं और बाहर कितने और काम उनको निपटाना पड़ा ये इवेंट बनाने के लिए, और आपके और बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सब में उनका काफ़ी श्रम चल रहा है. बहुत अच्छा लगता है, हमको भी प्रेरणा मिलता है जो अपने काम में पूरा हिम्मत लेके काम करते हैं, पूरा एकदम 100% डेडिकेट होके करते, तो हमको भी अच्छा हौसला मिलता है. तो नमस्कार आप सभी के लिए भी. तो जैसा सर ने बताया था कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हैं जिनके वजह से कभी कभी दिक्कतें हो जाती है और मन उदास हो जाता है. तो हम आज एक ऐसी विद्या सीखेंगे, ऐसे ध्यान आज सीखेंगे जो हमको हर वक्त खुशी में खुश रह सकते हैं. या सो टुडे विल बी लर्निंग अ टेक्निक विच विल हेल्प अस टू लिव हैप्पीली, irrespective what the conditions, what the surroundings, what the physical and other elements are. So it's an exclusive mental activity, but definitely connected physically as well. Yes, and it's a khulja sim mode. Yeah, you have all the happiness within you, no matter what the situation is. How to unlock it? So there's a very simple way to unlock it. And if any kind of sorrow, disappointment, hurts you, there is a way actually to come out of it. As Kamalji was saying, a very secular way. We are not associated with any religion. We are not anti. We are for humanity. That's it. Yeah, and how any human being can live happily. That's the only objective. And this session, I'm in fact conducting on behalf of our teacher, Sri S.N. Goenka ji. The audio instructions which you would be listening are actually delivered by him. Yeah, and we will first start off with the meditation. It's a very simple meditation. The instructions are very simple, self-explanatory. We are just asked to sit in a very relaxed way, relaxed posture. Yeah, back and neck straight, eyes and mouth gently closed. Make sure you're not taking any backrest, because the moment we take backrest, we fall asleep while meditating. Yes, and then we follow the instructions as they are. The instructions is just to observe our natural breath.
This is not pranayama where we regulate our breath. Yeah, what we will be learning is anapana meditation, in which we would be observing the natural breath, the pure breath. Don't mix any words, nothing with it. Yeah, and observe the way it is entering into the nostrils and exiting. Just focus your entire attention at the entrance of the nostrils, above the upper lip, yeah, and below the nostrils. In that place, just keep checking the breath coming in, the breath going out. That's the only instruction. Yeah, rest all will be there. Kindly follow it. Post the session, we will have a brief orientation or a talk of what we have been doing and how to utilize this technique to live happily. Yeah, so I'm starting the session, the meditation session, in fact. तो अब ये साधना किसी अन्य प्रकार की साधनाओं से भिन्न है। यहाँ किसी कल्पना के लिए या किसी और चीजों के लिए महत्व नहीं है। हम अपना साधारण सांस जो अपने नासिका से भीतर जा रहा है और नासिकाओं से बाहर आ रहा है, इसको बस जानेंगे। हमें इसमें कोई बदलाव लाना नहीं है। सहज भाव से जैसे भीतर आ रहा है और जैसे बाहर जा रहा है, इसे हमें जानना है बस। और ये शिविर हम अपने पूज्य गुरु जी के ओर से, श्री सत्यनारायण गोयंका जी के ओर से हम इसको प्रचारण कर रहे हैं जी। तो इन सूचनाओं को आप आराम से सुनिएगा और सुनते सुनते ही साधना करना है। आराम से बैठना है, कमर, पीठ और गर्दन सीधी रखनी है, आंख और मुंह बस बंद रखनी है। नासिका से सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, इस चीज को हमें जानना है और कुछ नहीं। और जैसे जैसे जो सूचना आ रहा है उसको आप सुनते सुनते साधना कीजिए। उसके बाद हम आगे के चीज की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ के शुरू करते हैं। सिट इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर, वेदर यू आर सीटेड ऑन अ चेयर और ऑन द फ्लोर, डजंट मैटर, बट मेक श्योर यू आर नॉट लीनिंग बैक। आप जमीन पे बैठे हैं या किसी कुर्सी पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतनी सी एक ध्यान रखिए, आपका पीठ पीछे किसी चीज का सपोर्ट मत लीजिए, बस उसको इंडिपेंडेंट रखिए सपोर्ट से जहां तक हो सके। अगर कोई आपको शारीरिक दिक्कतें हैं तो कुछ देर के लिए रिलैक्स करके फिर आप आराम से बैठिए। Now let us practice Anapana for about 10 minutes. Practice Anapana. Sit comfortably in any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed and focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils. And remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing through left nostril. Passing through right nostril. Or through both the nostrils.
Just remain aware, do nothing. Just remain aware. Alert, attentive, vigilant, remain alert, attentive, vigilant, constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath. Keep your attention steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils. Like a gatekeeper, like a watchman, aware of every breath entering the nostril, aware of every breath moving out of the nostril. Alert, attentive, vigilant.
Incoming breath, outgoing breath, natural breath, pure breath, nothing but breath. Bhavatu sabda mangalam, bhavatu sabda mangalam, bhavatu sabda mangalam. Good, good. Be happy. Be happy. Be happy. Yeah. Okay. You may gently open your eyes now. Yeah. You may relax your posture as well. आराम से बैठिएगा, आंख खोल सकते हैं आप, आसन को भी विश्राम कर सकते हैं जी. Kamal ji, will I be able to share my screen? Because there's a PPT to be presented. If it is fine, if I can't also, but if there is a possibility. Okay. So how did you all feel? आपको कैसा लगा 10 मिनट का ध्यान के बाद? जी, 10 मिनट के इस ध्यान के बाद आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा तो कुछ महसूस हुआ, मन शांत हुआ है, मन में जो थोड़ा बहुत बेचैनी था कम हुआ. हाँ. और एक जरूरी बात जो हम सबके लिए है, क्या हम लगातार 10 मिनट तक सांस के साथ ही जुड़े थे? या for the entire 10 minutes were we completely observing the breath? Oh no, mind went here and there. या मन यहाँ वहाँ भटक गया था जी. अच्छा, तो कहाँ भटका, किधर गया है? अरे बहुत चीजों पे गया है, अच्छे बुरे, क्या पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे. Yeah, good, bad, what kind of thoughts were coming, just rolling in them. Okay. So now the simple thing, सबसे आसान सा चीज, हम लोग क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था? What were we doing and what was happening? We were trying to be with our breath. Yes. हम लोग तो अपना सांस जानना चाहते थे. तो क्या 10 मिनट हम उसको जान पाए पूरा? Were we able to know it for continuous 10 minutes? No, isn't it? इधर उधर गया तो किधर गया मन? और जब आपने शुरू किया, आपने बताया कि हम आराम से खुशी से जीने के लिए कुछ सीखेंगे आज, है ना? लेकिन आपने तो ये फिर कुछ सांस के चीज बीच में ला लिए. कहाँ हमारा खुशी और ये सांस? तो समझते हैं चीज को, बहुत गहरा संबंध है, समझते हैं चीज को. हमने जैसे ही सांस का काम शुरू किया है, या when we started this session, I said we said we will learn something to live happily. And when it comes to practice, you have asked us to see this breath, observe this breath. Now, what happiness and this breath have got to do with each other? Yeah. So let's discuss this. Let's try to understand, in fact. There's a very deep science between them. Yeah. And how we can explore it by ourselves. तो जानते हैं क्या करना है? We were observing our breath. Yes. Which breath can I observe? हम कौन से सांस को जान पाते हैं? केवल इस क्षण की सांस को हम जान पाते हैं. We can only know the breath of this moment.
I cannot know the breadth of the past. I cannot know the breadth of the future. भूतकाल, भविष्यकाल, इन चीजों का हम सांस को जान ही नहीं पाएंगे जब तक वो वर्तमान में ना आ जाए. So, oh, we have started living in the present. हम वर्तमान में जीना शुरू किए हैं. पास्ट में नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट. ओ, और पास्ट में भी जाता है मन, फ्यूचर में जा रहा था बीच बीच में. तो जो ख्याल आ रहे थे वो कहाँ के हैं? पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं. और ये मन पास्ट और फ्यूचर में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको कुछ चीज पसंद है, उसको कुछ चीज पसंद नहीं है. या if I'm not with the breath, then what was I doing in between? Oh, I was rolling in thoughts of past, thoughts of futures or future. Yeah, oh, we were rolling in them. And we wanted to be in the present. Everyone has to live in the present, but the mind is rolling in past and future. Why does it roll? Because it likes something and dislikes something. Something happened in the past, which I liked it very much. Just recollect it. Wow, it was so nice. Again in future, this should happen. Yeah, again in the future, when I meet that person, oh, jumped into future. But that day, this person told me, I didn't like it, oh, again from future, I went into past. So next time when I meet him, I should not do this. Oh, again from past, I'm jumping to future. I am liking, I am disliking, I am liking, disliking. Through that, I am rolling to past, future. कुछ मन को अच्छा लग रहा है, कुछ मन को अच्छा नहीं लग रहा है. अरे उस दिन कुछ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ. भविष्य में भी कभी दोबारा ऐसा होने से ना मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा. चलो चले गए फ्यूचर में. लेकिन वो आदमी जो बोला था ना, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. ओ, फिर फ्यूचर से फिर पास्ट में आ गया. अच्छा, इस बार वो ऐसा बोलेगा ना, मैं ऐसा जवाब दूंगा. अच्छा, फिर चलो चले गए फ्यूचर में. तो मुझे कुछ पसंद आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, इसको लेके मैं भविष्य वर्तमान आगे पीछे मन डोल रहा है. पर हमको तो वर्तमान में जीना है. यस. तो हमने क्या किया? सांस को जानना शुरू किया है. ओ, जब हम सांस को जानेंगे तो प्रेजेंट में रहेंगे. और ऐसा कौन सा सांस है जो आपको अच्छा लगता है और कौन सा सांस है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सांस सांस है. Which is the breath that which you like most, and is there any breath that, this kind of breath I don't like? Nothing as such. Breath is breath. Let it come, let it happen, let the breathing take place. Isn't it? So this is how it goes on. So by observing breath, we are in the present, not liking, not disliking anything. Nothing about past, nothing about future. Just living in that moment. बस वर्तमान क्षण में है. ना पास्ट का फिक्र है, ना आगे का फिक्र है. बस इस क्षण में. और जो जैसा है उसके साथ, सांस जैसा है वैसा है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल से आ रहा है तो राइट नॉस्ट्रिल, दोनों में से आ रहा है तो दोनों में से आ रहा है. जान रहे तो जान रहे, नहीं जाने तो नहीं जान रहे. अरे हाँ, ये इस क्षण की सच्चाई है. हम किसी कल्पना में नहीं जी रहे हैं. This is the truth of the movement. The way breath is, it is. Passing through left, passing through right, it is right. Passing through both nostrils, it is passing. I don't know. I am with the truth of the present moment. Simple. Not merely present. In present, I am not liking, disliking anything. I am not in any imagination. I am not with any imagination. I am with the truth of this moment. बस मन अपने आप बलवान होना शुरू हो जाएगा. अरे मन को बलवान करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं. जी बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फिर ऐसा विधि क्यों? सांस को क्यों देखना है मन को बलवान करने के लिए? क्योंकि हमारे सांस और मन दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है. या यस, नाउ आई एम इन द प्रेजेंट मूवमेंट, not rolling in past, future, not liking, disliking, not with any imagination. I am with the truth. Fine then. How is it connected to my happiness? When we are in the present moment without craving, aversion. Craving means likes, aversion means dislikes. Not with any imagination, we are with the truth. Mind strengthens. Oh, yes, mind strengthens.
But there are so many ways. We pray, we chant, we imagine, we verbalize. There are so many ways. We are not here to condemn them. Yeah. But the beauty of this approach is you yourself know, आप ही को पता है, हम ये किसी चीज को कम ज्यादा नहीं दिखाना चाहते हैं, बस बात को समझना है। अच्छा, हम कितने बार रोए हैं बचपन से लेके अब तक? कई बार। और जब हम रोते हैं तो हमारा सांस कैसा होता है? साधारण सांस होता है या सांस थोड़ा उथल पुथल हो जाता है? हो जाता है ना, थोड़ा बहुत उथल पुथल हो ही जाता है। इज योर ब्रेथ नॉर्मल व्हेन वी क्राई, और इट लूजेस इट्स नॉर्मैलिटी, इट बिकम्स अ बिट abnormal, the rhythm becomes abnormal, isn't it? How is the mind? Is it calm or disturbed? Oh, disturbed. Mind is disturbed, breath is disturbed. In a darkness, I see a rope and assume it to be a snake. Oh, रे सांप आ गया। ओ, डर लग गया। सांस कैसा हो गया इस वक्त? एकदम नॉर्मल है? नहीं है, फिर अबनॉर्मल हो गया है। ओ, और मन कैसा है? अरे घबरा गया है, हलचल हो रहा है मन में। हाउ इज द माइंड? टेंस्ड, फियर स्टक। हाउ इज द ब्रेथ? अबनॉर्मल। ओ, मन अपना संतुलन खो जाता है, बैलेंस खो जाता है, तो सांस भी अपना संतुलन खो जाता है। आप बहुत श्रद्धा से, बहुत इच्छा से आप एक किताब पढ़ रहे हैं, विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड डिवोशन यू आर रीडिंग अ बुक, completely focused, you are reading the book, trying to understand what is there. How is our breath at that point of time? Very calm and relaxed. Oh, mind is focused, mind is calm, breath is relaxed. Mind is agitated, fear struck, disturbed, breath is also disturbed. Oh, mind and breath are closely connected to each other. मन और सांस बहुत गहरा संबंध है दोनों के बीच में। ओ, ठीक है, गहरा संबंध है। फिर आपने सांस को जैसा है वैसे जानने के लिए कहा। हमने नहीं कहा, गोयंका जी ने नहीं कहा, सत्यनारायण गोयंका जी जिनके बिहाफ में हमें कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने कहा है। दिस इज द साइंस विच वॉज डिस्कवर्ड बाय गौतम आदि बुद्धा। ब्रेथ एंड माइंड बोथ आर strongly connected, and whenever a defilement arises in the mind, breath loses its abnormality. Then do nothing, just observe. Just observe, oh, this is how my breath is at this point of time, that's all. And mind starts relaxing. कुछ करना नहीं है, ये मेरे बोल नहीं है, सत्यनारायण का गोयंका जी के बोल नहीं है, भगवान बुद्ध के बोल है। वो एक वैज्ञानिक थे, वो किसी रिलीजन वगैरह के कोई स्थापित नहीं थे। उन्होंने जो समझाया, बस मन के बारे में समझाया, शरीर के बारे में समझाया। ओ, जैसे ही मन उतल पुतल हो जाता है, सांस भी अपना साधारण स्वभाव खो जाता है। तब जैसे होता है, मन अपना संतुलन खो जाता है, सांस पे आ जाइए, सांस जैसा है उसको वैसे जानिए। बस ये साधना का नाम ही ये है, आनापानसति। आन मतलब भीतर आने वाला सांस, अपान मतलब बाहर जाने वाला सांस, सति मतलब जानकारी। Being with the breath as it is, the incoming, outgoing. That is the name of this meditation, with Anapana meditation. An means incoming breath in the ancient language of India. Apan means outgoing breath. Sati means to be aware of it. Oh, whenever I feel disturbed, just be with the breath. And breath is not something which you deposit in your bank and go elsewhere. बस घर पे रख के आ गए, दूसरे रिश्तेदारों को दे के आ गए। नहीं, नहीं दे सकते किसी को। अपना सांस अपने साथ है और अपने साथ ही रहेगा। बस, तो हम जब चाहे तब सांस को जानते हुए मन को निर्मल कर सकते हैं। बस जानना है और कुछ नहीं। मन भटकता है तो बस स्वीकार करके वापस ला लो। अरे मन भटक गया, तुरंत जान लिए, आ जाओ वापस। ठीक है, बस इस तरह से साधना करना है और इस तरह से मन को संतुलित करना है। मन को एकदम समता में लाना है, शांत स्वभाव है,
कुछ उलझना नहीं है। अच्छा इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा है मेरे मन में गुस्सा है, उसको तिरस्कार नहीं करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। हाँ हाँ मैं सही हूं इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, या उसका गलत है इसीलिए, नहीं कुछ नहीं। ओ मन को शांत करने के लिए इस वक्त सांस जैसा है उसको वैसे जानो, बस खत्म। यही हमारे साधना है, ये आनापान की साधना है। सुबह शाम जैसा भी हमने 10 मिनट किया है आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ आनापान इज प्रैक्टिस्ड। जस्ट बी विद द ब्रेथ whenever you feel you're disturbed, and this practice of observing the breath will come when you make it a routine in your life. हाँ इसको हमारे जीवन में एक अंग बनाना है, तभी तो हम इस पे मलकियत पाएंगे। तो सुबह शाम 10-10 मिनट ऐसे ही साधना कीजिए जैसा हमने अभी किया है, बस सांस को जानना है। जैसे जैसे हम सांस को जानते हैं, अभी समझ गए कि सांस को क्यों जानना है। अरे ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरा संबंध है, और ये हमें वर्तमान में जीने के लिए मदद करता है। ना ये कुछ अच्छा मानने देता है ना बुरा, तो किसी तरह का उलझन उथल पुथल कुछ नहीं। मन गहरा संबंध है सांस के साथ, तो एकदम मन संतुलित हो जाता है। Mind is strongly connected with the breath. It is truth of the moment. We don't like or dislike it. So by observing it, mind calms down. Simple. But लेकिन जब हम ये सांस जानने का काम कर रहे थे, एक दो कठिनाइयां आएंगे। अभी समझ गए कि सांस को जानना है, लेकिन जैसे जैसे जानने के लिए बैठेंगे एक दो कठिनाइयां आते हैं। जैसे कि मन किसी न किसी चीज को लेके दौड़ लगाते जाएगा, अरे ये वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। या mind keeps chasing something, अरे this went that way, that went this way, this should not have happened, that should have happened. It keeps chasing these thoughts again and again and again. Do nothing. The moment you realize mind has wandered away, accept it. It is the old habit pattern to roll in past and future. Just accept, bring it back. No feeling of defeat, no feeling of disappointment. Arey, I was here to meditate. Why all these are coming? No, nothing doing. Yes, it went away. I'll simply bring it back. मन भटक गया विचारों में, कुछ नहीं करना है, जानना है भटक गया, ठीक है, ये हमारा पुराना स्वभाव है, कोई बात नहीं। निराशा नहीं, दुखित नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, गया सो गया, यहां से फिर अच्छे से करते हैं। गया सो गया, फिर यहां से, क्योंकि हम जो क्षण गया उसको नहीं ला सकते ना, और जो आया नहीं उसमें तो जी नहीं सकते। तो यही जीना है तो छोड़ो, जो हो गया, यहाँ पे जी लो बस। ना किसी चीज की पसंद ना पसंद, कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। मन भटक रहा था, भटक गया, वापस ला लो। कभी कभी नींद आने लगता है तो आंख खोल लीजिएगा, थोड़ा तेज सांस से काम कीजिएगा, थोड़ा तेज सांस। ज्यादा देर मन विचारों में जा रहा है, एक आध मिनट में वापस नहीं आ रहा है, एकदम लोट पे लोट, नहीं, गड़बड़, तभी भी आप थोड़ा तेज सांस से काम कर सकते हैं। तेज मतलब प्राणायाम जैसा नहीं, जैसा हम फूल का खुशबू सूंघते हैं, हाउ डू यू स्मेल अ फ्लावर, बस with that intensity you slightly harden your breathing. If you feel like your mind is going into sleep or rolling in thoughts for longer time, this is how you stop that. No, you take little hard breathing. Our job is to calm down the mind, not to roll in this. हाँ, हमको कीचड़ में नहीं पड़ना है, हमको कीचड़ से बाहर आना है, चलो कम, बस। You feel like changing your posture, change it, absolutely no problem, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से। बट सांस को जानते हुए, यू चेंज योर पोस्चर, आसन बदल सकते हैं, लेकिन सांस को जानते हुए, बाय नोइंग द ब्रेथ। ब्रेथ डिडंट स्टॉप बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट्स इन द बॉडी, isn't it? Breath is still there. So be with the breath, change your posture, you sit in whichever way you're comfortable. Only thing is back and neck straight. Yeah, you feel it is stressed out, lean back for a while and again keep it straight. Simple. Don't pressurize yourself. Do it in a very relaxed way, but in a focused way. और कुछ नहीं, यही काम करना है, ठीक है। सो दिस वॉज आनापाना। अभी आप लोग 10-10 मिनट ये आनापान के जो कर रहे हैं, ये दरअसल विपश्यना 10 दिन के शिविर का एक अंग है। विपश्यना भारत की प्राचीन भाषा की एक शब्द है जिसका अर्थ है पश्यना, मतलब जानना।
विपश्यना मतलब विशेष रूप से जान, और ये विशेष रूप क्या है? जो जैसा है वैसा है, बस. So vipassana is an ancient technique of this country, a meditation technique, which is taught in 10 days residential courses now. And this anapana is a small part of this 10-day course. Yes, and the word vipassana means, pasana means to experience, vipassana means to observe or experience things as it is, not as we want it to be. मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं, जो जैसा है वैसा है. The way it is, that's all. We observe it. We know it. बस जानना है, जो जैसा है वैसे जानना है. अरे मेरा मन इस क्षण भटक गया, जान लिया, चलो वापस ला लो. अरे इस क्षण का सांस मैंने जान लिया, ठीक है, अगला क्षण देखते हैं कैसा रहेगा. अच्छा जान लिया, ठीक है, अगला क्षण देखेंगे कैसा रहेगा. अच्छा अभी भटक गया, चलो फिर जैसे जानकारी हुआ वापस ला लो. जो जैसा है वैसा, ना किसी को अच्छा ना किसी को बुरा. अरे 6-7 सांस जान गए, अरे कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जाने हैं बस. इस क्षण कितने सांस है? इस क्षण तो एक ही सांस है. जो आप 6-7 की बात कर रहे हो तो बीत गए. इस क्षण, बस इस क्षण, इस क्षण. विपश्यना का अर्थ भी यही है. और सांस एक ऐसा क्रिया है, breath is such an activity which is connected with the physical and the mental part of us. इसीलिए हम सांस को जान रहे हैं. तबीयत ही तो खराब है ना, मन को तो खुश रख सकते हैं, और सांस इन दोनों से जुड़ा हुआ है. हम चाहे तो सांस को थोड़ा तेज कर सकते हैं, थोड़ा पैदल जल्दी जल्दी चले तो सांस भारी हो जाता है, मतलब शारीरिक भी है सांस का और मन का भी है. हम तो कई बार भूल भी जाते हैं जिंदगी में कि सांस लेना है करके, पर भी हमारा सांस चलता है, रुक नहीं जाता है. तो कौन चलाता है? अरे मन चलाता है. Breath is a physical and mental activity. You walk fast, you run a bit, breath becomes a bit harder. So physically, it is influencing breath. And so many times in the life, we in fact forgot to breathe while we were sleeping, while we were doing some other activities. Every time we don't keep saying, Hare, keep breathing, otherwise I'll die. No. Oh, then who is taking care? Our mind. Our mind takes care of the breath. Oh, then breath is physical, mental, both activities. You have physical problem. Why do you want to make it mental? Mentally, we can still be happy. Two separate things. As of now, we feel this is only one. But now when we understand, oh, two separate things, physical things are there as it is. If they improve also, we are happy. If they don't improve also, my mind can still be happy. This is what Anapana is training you. So by morning, evening practice of this 10 minutes, observing the breath as it is, physical, mental activities, you can clearly separate. Are physical problem is there? No, okay, that is physical. Why should I make it a mental problem? Yeah, and we become happy. Okay, so this is how we practice. Vipassana is still one step deeper than Anapana. But Vipassana is not taught this way in open. Vipassana is taught in a definite 10-day residential courses at the meditation centers with physical presence of teachers and students at one place in a segregated environment of male and female. सब अलग अलग रह के इस चीज को सीखते हैं. ठीक है, तो जब मौका मिलेगा आप जरूर विपश्यना साधना सीखिएगा. जब तक वो दिन नहीं आता है तब फिर भी लाभ उठा ही सकते हैं आनापान करके. So the day when you practice Vipassana, you will practice. But until then, you are not away from the benefits of Vipassana. You are still practicing Anapana. You can be physical, mental, both you are experiencing. You will know, even though there is physical discomfort, how to mentally be peaceful and happy just by observing the natural breath. Some disorder happened in the body. Yeah, breath becomes abnormal. Simple. Okay, be with the breath. Let me be with my breath. Okay, हाँ, body में pain है. Okay, breath कैसा है? हाँ, when you are with that breath, मन शांत हो रहा है. As and how your mind becomes calm, धीरे धीरे body भी आसान हो जाएगा बैलेंस करना. वो तकलीफ, ज्यादा तकलीफ नहीं लगेगा, तकलीफ कम हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़े से फिजिकल को ज्यादा सा मेंटल बना लेते हैं. अरे कुछ हो गया शरीर में, गड़बड़, क्या हो गया, मुझे कुछ हो जाएगा.
नहीं यार ये क्या होगा, देखते हैं, सांस में तो गड़बड़ होता है, चलो पकड़ लेते हैं। अब ये घोड़े का लगाम हाथ में आ गया है, चलो गुड, so you can ride the horse now. Yeah, this is how we practice. Yeah, and whenever time permits, you can definitely take up a 10-day course based upon your conditions. The environment here is to support people come and learn meditation. There is nothing to pressurize. आराम से इस चीज को आप करना है सुबह शाम, या प्रैक्टिस इट वेरी रिलैक्स्ड वे, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ विद दिस। ये शांत से जीने की कला है, या इट इज टू लिव पीसफुली, सो प्रैक्टिस इट पीसफुली, डोंट फोर्स योरसेल्फ बट रिमेन फोकस्ड एंड प्रैक्टिस द वे इट इज, बस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। या Sir, there are any questions in yeah, the. that's any questions please? Yeah, so there is one question asked by Mr. Prasad. As a dialysis patient, can we do Anulom Vilom or Kapalbhati, and how much time daily? That's the first question. And second question is there Vipassana Shibir for dialysis patients, as we need dialysis every 2 days? Okay, so if dialysis requires a huge equipment facilitation and it's a portable, it's a movable thing, then they can definitely bring it to the center, they can be assisted, absolutely no problem. And when coming to Anlom Vilom kind of thing, that's something related to yoga, so we are not into yoga, we teach Anapana. So Anapana definitely you can practice. Yeah, if there's a physical trainer teacher whom you're associated with, please check with them how it needs to be practiced for a patient, under which conditions, how it needs to be done. Yeah, any other questions please? Do we have any other Or there are no questions apart from this, but we should just give it a couple of minutes because I think people Yeah, are listening please. to you, so they might have to think a little if they have any questions. Yeah, please. If you, as viewers, if you have any questions, guests to this webinar, if you have any questions, please type them in the Q&A box that you see in your screen. And if you're watching this on Facebook, please type the questions in the comments below this video, live video. Yeah. So I believe they can have 10 minutes in the morning and evening to practice. Yeah, I think that should be possible. Yeah. And yes, definitely any patient with medication care can participate in a Vipassana course if they have a right support person with them. Yeah, there is no restriction as such. We don't want to stop anyone from reaping its benefits. But yes, do consult your doctor as well, because Vipassana is a 10-hour, 11-hour program a day. And here the teachers are not to force you to do anything that way. But yes, come mentally prepared. Like, I'll undergo here for 10 days and be here 10 days because it's a residential program. Your mind has to be strong and it'll become much more stronger when you practice Vipassana. The only challenge, sir, is that dialysis treatment is required, 3 times a week for 4 hours each time. And then there is a large machine and a water treatment plant. So, and then there's a technician that is required for that. So while I would not say it is impossible, but it requires some significant planning and coordination with the Vipassana Center as well. What we can do is if any of you are interested in exploring this, then we can have a separate discussion and see if it is possible, not making any commitment or a promise here, but this is definitely something that we would love to explore and see if it is possible, to do. I'm sure we will do everything we can to make it happen if you are interested. So we will explore it. So please reach out to us separately and then we can have a discussion on that. Because there are various Vipassana centers. Right. All centers, we can't ask them to, facilitate. Yes. What we can do is one center, we can discuss, have whatever needs to be done, the support system, we can plan, definitely. I mean, we look forward to support. There is nothing to restrict from our side. So we'll work with the practicality of it. Yes. So there is a question, but that's not related to the topic. Varsha ji, we will take that up separately.
about the body becoming weak and what can we do to stay well. That is something that we will take up separately and not as a part of this. There is one question I think which might be related to this, sir, is that Dhananjay ji says, I have neck pain also, so I'm not relaxed. So what can they do if they want to do Anapana, but they're having neck pain, so it doesn't allow them to be relaxed and, completely focus on the Take breath. back support for some time. And then even for 5-10 seconds, you're able to keep your back and neck straight because you have a challenge. Okay, that needs to be addressed. Or 10 seconds beyond that, I'm not able to. Okay, no problem. Again, go back to your rest position. Relax for a minute or two. Again, come forward, keep it straight. This time, couple of seconds more than earlier. Just try to improve that. Simple. And as and how you see the awareness in the body, the awareness of the breath in the mind increases, strength in your back and neck automatically will start coming. Because that's a different flow of mind energy which takes place. That's a different awareness which comes up into your body. So the strength also will come. So there are physical challenges, no doubt. But yes, the mental strength will help us to keep becoming better and better over a period of time. So keep trying. Don't strain yourself, but few seconds is also fine. Baby steps, that's all. Any other question? If we don't, then we'll just play another 10-minute session for them to practice. Yeah, Sure. we'll just We repeat the can same session so Yes. that now they're clear how to practice and all. Absolutely. Please. Okay, thank you, sir. Now let us practice Anapana for about 10 minutes. Practice Anapana. Sit comfortably in any posture that suits you. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. Keep your mouth gently closed and focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils. And remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing through left nostril. Passing through right nostril. Or through both the nostrils. Just remain aware, do nothing. Just remain aware.
alert, attentive, vigilant, remain alert, attentive, vigilant, constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath. Keep your attention steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils. Like a gatekeeper, like a watchman, aware of every breath entering the nostril, aware of every breath moving out of the nostril. Alert, attentive, vigilant. Incoming breath, outgoing breath, natural breath, pure breath, nothing but breath.
Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Good, good. Be happy, be happy, be happy. So I feel this session was much better than the earlier one. Yeah. So this is how you practice. And during this meditation practice, whenever you feel peace of mind or calmness in your mind, you can just share that happiness with everyone. May all beings also experience such peace and happiness. May all be happy. Just share whenever it is. Whenever you feel peaceful, whenever you feel you're calm, you just share it with others. That's the biggest treasure what we can share with others. So keep doing that way. Whenever you naturally feel it, there's no force and pressure on it. Yeah. Okay, I guess thank you so much, Harish Nath ji, for taking your time for this session. I'm sure all our guests and viewers have benefited greatly. I thank the Vipassana Research Institute for the phenomenal work that they've been doing in this field. And thanks Manju Kandagatla for helping us organize this along with the Vipassana Research Institute. So I hope all of you have benefited from this webinar, and please check back, follow us on social media and so on to learn more about such sessions that we keep organizing month after month. Thank you so much. Good evening. Goodbye.